Let's start with today's daily problem. First of all, lead code one. This is the problem, longest common substring. I'm sure you might have done this before, like, yeah, DP problem. Some people told me that I should do more DP question. So that's why today we are again with another DP problem. No, not that's why, because this is daily problem and based on DP. So yeah, that's about it. And longest common subsequence, you have been given two string. You have to tell what is the longest common subsequence in these two string. For example, A B C D E or A C E. What is the longest common subsequence? Subsequence is something else, which is this is not a substring. Like these don't have to be together, but these elements have to be present in both the strings. So ACE is something which is present in both the string ACE and here ACE also there. So that's what it is, the maximum one. And ABC okay, in this case all, and ABCDF in this none, right? Okay, so zero is the length of the longest common substring. It's simple. You 2D DP question. You have to do double iteration because of the two string n I plus plus, and then for int I equal to j equal to 0 till j less than m j plus plus, and then you have to see if your string are equal. So t1 I'm taking text case 1, or let's say s1 now, string 1 minus 1 is equal to s2 of j minus 1. Then you will be calling something like dp of I comma j would be equal to 1 plus dp of I minus 1, sorry guys, dp of I minus 1 comma j minus 1. Otherwise it would be something like dp of I comma j is equal to max of dp of I minus 1 comma j comma dp of I comma j minus 1, right? So this would be that. And the basic thing which we do is we create a dp array in dp of 1001 and 1001, and we'll set this first row, first column of this dp array. How? And I equal to 0 till n I plus plus, and dp of I, right? This is the number of rows, and 0 would be equal to something like 0, right? Again, and then same thing, but over here we'll do with the first initialize um, row first row as the 0. Okay, that's about it. And then you just return dp of n comma m, because that's the length of the two string. You have to do it equals and equals, and then you have to do it like s1 and then s2. Now I think that's all. Let's see let's see So this is the DP array, and okay, and n is equal to s1 dot size and m is equal to s2 dot size, right? That's what we do, right? We first take the size, we initialize the DP of 0 0. Like for example, this is your DP table. So first row would be 0 and first column would be 0, right? Just fix this, yeah. And what is this showing? At which line? S1 S2 DP of I 0, right? And okay, you have to start from I think 1, right? Because okay, minus 1 is not possible, right? You have to start with 1. That's why your first row, first column would be 0, and over here you would be can be right, you can write 1. Okay, you need to comment this up. For example, if I'm taking this test case A B C D E and ACE, okay, that was the test case. And then this is the, okay, let's do something like this. Let's, okay, make some space over here, right? So ABCDE and ACE. First of all, okay, 0 0 mean, which means like if I place it just below it, right, then it would be more good. So before this, let's say there is an underscore, nothing, right? So nothing, but A and A, how will I check A and A? I will go, okay, for 1 to 1, first iteration will be I is equal to 1 and j is equal to 1. S of I minus 1, yani s of 0 is equal to s of 2 of 0, right? Yeah, a is equal to a. Then I'll say, okay, dp of ij, yani ki dp of 1 comma 1 would be something like what? 1 plus this dp of I minus 1 comma j minus 1. Though it was already 0, I minus 1 comma j minus 1, this was 0. You'll do just plus 1, okay, because these two elements are equal. Now you will go, I will be just 1 and j will be 2. Let's say second string where you go up to c, and you'll say, okay, s of a is equal to c. No, it's not. So 1 plus it will go over here, max of I minus 1 comma j, which is I minus 1, yani ki 0 comma this, or otherwise max of I, let it be I and let it be j minus 1. So that would be something like that.
so there would be one, right? And then again it is n comma m. So number of rows in n, number of column is just 3 because 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, yeah. So it would be something like that. And then again in this row 2 comma 1, it will be asking ki s of 2 is equal to s of 1 or not. S of 2, which is this, I think c na. um yeah, it would be asking s of I minus 1, s of 1, is it equal to something like that you will do, right? And then you'll say okay 0 in this case because this b is not equal to the c. So you will be asking okay, what is b which matching with a? It's a 0. What is a matching with c? It's a 0 again, right? So no, 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 it should be 1, right? Why it should be 1? Because I minus 1 comma j, 1 j 2, 1 पे अभी जा रहे हैं हम। तो 2, 1 ना, तो 2 में से जब -1 करेंगे तो 1, 1 पे आ जाएंगे हम। और 1, 1 हमारा 1 था, तो 2, 1 भी हमारा 1 होगा, ठीक है? क्योंकि देखो ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये वैल्यू अगर तुम्हारा इक्वल एलिमेंट तो ये यहाँ से आ रही है, अगर इक्वल नहीं है तो ये अपने टॉप रो और अपने लेफ्ट वाले से पूछ रहा है, ठीक है? तो अभी तो इसको इक्वल था तो इसने यहाँ से पूछा, अभी ये इक्वल नहीं है, ठीक है? बी एंड सी इज नॉट इक्वल, तो ये 1 और 0 में से 1 उठा के रख देगा, मैक्स ऑफ दैट, राइट? एंड देन अगेन अब इसकी बात करें तो क्या हमारा बी और इसमें है, आप सेकंड नेक्स्ट पे, ठीक है? आप इसमें फर्स्ट को चेक कर रहे होंगे और इसमें अभी आप किसको, लास्ट वाले को चेक कर रहे होंगे, यानी ई को चेक कर रहे होंगे। क्या बी और ई इक्वल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप इन दोनों में से मार्क्स उठा के रख दीजिए, यानी कि 1 और 1 में से मार्क्स उठा के आपने 1 रख दिया, ठीक है? एंड देन यू विल सी अबाउट ओके नाउ यू आर ऑन सी। तो सी से हम पूछेंगे क्या सी आप हमारे ए के बराबर हैं? तो एक्चुअली ना एक एक पंगा हो गया है। एन कॉमा एम ना, जैसे एन की वैल्यू मान लो 3 है, ठीक है? 0 देयर शुड बी दिस एंड देयर शुड बी दिस, राइट? एंड देयर शुड बी दिस बिकॉज ए के साथ कितना दे रहा है? 1 दे रहा है, ठीक है? ये इन दोनों के साथ कितना देगा? ये भी 1 देगा। ए और ए सी हमारा 1 देगा, ठीक है? क्योंकि ए कॉमन है। ए बी और ए सी हमें कितना देगा? ए बी और ए हमें कितना देगा? पहली बात 1 देगा। ए बी और ए सी भी हमें 1 देगा, ए बी और ए सी भी हमें 1 देगा, ठीक है? Now let's talk about this like A, B, C and I think yeah we made two one row and column because यार जीरो से हमने स्टार्ट नहीं करा ना, हमने मतलब 1 से देखा। तो अगर जीरो से स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पे 4 रखने पड़ेंगे और यहाँ पे 6 रखने पड़ेंगे, राइट? सो ए बी सी एंड ए में क्या कॉमन है वो कैसे पता चलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखोगे कि क्या मेरा जैसे ये सी पे पहुंच गया, क्या सी तुम्हारे ए के बराबर है? नहीं है, बट हम फिर क्या यहाँ से वैल्यू उठा लेंगे, हम यहाँ से 1 उठा लेंगे। ए बी सी और ए सी, क्या सी मेरे सी के बराबर है? यस, हाँ है। जब है तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1 प्लस हो जाएगा 1, ठीक है? 2। नाउ दैट्स हियर बिकम्स 2 लाइक ओके आई शुड ना also mention that ये सबसे पहले करना चाहिए था हमें, like over here this points to something like underscore, this points to something like a, this points to something like b, this points to something like c, this points to something like d, this points to something like e, and this points to something like again underscore, this points to something like a, this points to something like c, this points to something like e. So now हम चेक करें a b c and a c में कितना कॉमन है? वो 2 है और वो 2 आएगा भी आंसर, ठीक है? यहाँ से 1 + 1 a b c और a c में क्या कॉमन है? वैसे वैसे मत देखो, वैसे तो तुम देख के बता ही दोगे व्हाट इज अ कॉमन सब सीक्वेंस, बट लेट्स चेक फ्रॉम दिस। सो अभी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 2 3 कॉमा या 3 पे हम पूछेंगे क्या 2, 2 तुम्हारा इक्वल है, यानी कि 2 पे ए पड़ा सी, क्या तुम्हारा 2 और यहाँ पे 2 पे ई पड़ा इक्वल है? नहीं है। नहीं है तो यहाँ पे आ जाओ और फिर इन दोनों में से मैक्स उठा लो, तो 2 बोलोगे तुम, राइट? तो 2 ही है इसका आंसर ए बी सी और ए सी ई का। एंड देन ए बी सी डी में तुम बोलोगे कि क्या मेरा डी और मेरा ई बराबर है, ए बराबर है? नो, इट्स नॉट इक्वल। सो यू विल नॉट से कि यहाँ से देखो 0 और 1 में से उठाओ तो 1 मैक्स आएगा। अब तुम बोलोगे कि क्या मेरा सी और मेरा डी बराबर? नहीं है तो 2 आएगा। ए बी सी डी और ए सी में हमारा 2 सब कॉमन सब सीक्वेंस है, ए सी वाला। एंड देन यहाँ से जब तुम पूछोगे ए बी सी डी और ए सी ई, यहाँ से भी 2 आएगा बिकॉज डी इज नॉट इक्वल टू ई एंड इन दोनों में से मैक्स उठाया ए। अब ना बात आती है ई पे, ठीक है? तो यहाँ पे तो फॉर एग्जाम्पल 1 ही आएगा बिकॉज ई इज नॉट इक्वल टू ए एंड इन दोनों में से मैक्स उठा तो ये।
ना यहाँ पे आपका 2 आएगा बिकॉज ऑब्वियसली ई इज नॉट इक्वल टू सी, बट आपका इन दोनों में से मैक्स उठेगा तो यहाँ से वो आएगा बिकॉज यहाँ पे एबीसी है पूरा और एसी एसी कॉमन है, राइट। अब जब इनमें से मैक्स उठेगा क्या ई इज इक्वल टू यस, तो यहाँ से क्या आएगा 2 आएगा, 2 प्लस 1 इट वुड बी 3, सो दैट्स व्हाई at the last your answer is 3. And that's all about this question. This dp table you should be able to create, and yeah, that's about it. Okay guys, let's see how much time. Okay, 10 minutes, so we'll cover the gfg problem in the next video. Okay guys.